है मेरे साथ आज, यानी कि वेंसडे के दिन। आज कितने घंटे में, तकरीबन 4-5 घंटे के अंदर तीसरा T20 मैच जो है वो शुरू होने को जा रहा है। तो मैंने कहा भाई मैं वापस आ चुका हूँ, 2 दिन के लिए मुंबई गया था शूटिंग के लिए। आई एम बैक एंड इट्स बीन अ व्हाइल सिंस मैं आप लोगों के साथ जुड़ा इस चैनल पर। तो मैंने कहा क्यों ना आज शाम को होने वाले T20 के बारे में थोड़ी बातचीत की जाए आपसे। अगर आपके पास कुछ सवाल है, कुछ कमेंट्स है मैच को लेके, ज्यादा टॉपिक को यहां वहां मत ले जाइए। मानता हूं आने वाले दिनों में बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी भी शुरू होने वाला है, यानी कि 8 दिन में 9 तारीख को। पर लेट्स ट्राई एंड कीप द टॉपिक जस्ट टू दिस सीरीज। यस, अश्विन आर्या सिंह, हेलो जेमी भाई, हेलो अश्विन आर्या, आप पहले कमेंट करने वाले व्यूअर हैं। इस बात पर एक बार फिर से मैं आप सभी से दरख्वास्त करना चाहूंगा, प्लीज इफ यू ऑन द स्ट्रीम हिट द लाइक बटन। प्लीज 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 दोस्तों लाइक बटन दबाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप लोग ये करें, क्योंकि इतनी बार कह चुका हूं जितनी बार आप लोग लाइक बटन दबाएंगे, द मोर यू स्मैश दैट लाइक बटन the better the chances of this video reaching a wider audience. So please 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 do hit that like button. चिराग is saying hi Jamie, कैसे हो, seeing you after a long time. मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कहाँ थे भाई? आप तो पिछले कुछ 3-4 streams में I have not seen your name, so good to have you back. Hope you're doing well. If you have any questions about this match या this ongoing T20I series, तो please अपने फोन पे, अपने टैब पे, जिस भी डिवाइस से आप जुड़े हो यहाँ पे, आप उस के द्वारा मुझसे कुछ सवाल पूछ सकते हैं। मैं हूं जेमी ऑल्टर, ये है मेरी ब्लैक कॉफी एज यूजुअल। यू ऑल नो आई लव टू ड्रिंक ब्लैक कॉफी। तो दोस्तों ये बताइए, आप में से जो व्यूअर्स जुड़े हैं, हाउ हैव यू फाउंड दीज 2 मैचेस? एक मैच में न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करके वो अड्डेपुरा पे 175 ऑट, एंड देन सरप्राइजिंगली उस मैच में यानी कि रांची में जिस तरह से टर्न और बाउंस दिखाई दिया, इंडिया एंडेड अप विद अबाउट 155 फॉर 9 if my memory serves me right. And after that match, Hardik Pandya said it was shocking the amount of turn, and even Mitchell Santner said he was shocked, and these are the words they used. Shock शब्द का उपयोग दोनों कप्तान यानी कि हार्दिक पांड्या और मिचेल सैंटनर ने किया था रांची मैच के बाद, especially in the second innings when I think New Zealand used about 3 or 4 spinners. उसके बाद दोस्तों जो लखनऊ में मैच हुआ यानी कि एकाना स्टेडियम में, उसके तकरीबन 2 दिन बाद लखनऊ ग्राउंड के जो क्यूरेटर हैं उन्हें निकाला गया था बिकॉज ऑफ द शॉकिंग, एंड हियर हार्दिक पांड्या वाज मच मोर सीरियस इन हिज यूज ऑफ द वर्ड शॉकर. न्यूजीलैंड वर डिफेंडिंग अ टोटल ऑफ 99 दोस्तों, एंड दे यूज सम 6 स्पिनर्स एट वन पॉइंट. मार्क चैपमैन जो कि पहले कीपर थे, अब बैट्समैन है, कभी कभी पार्ट टाइम ऑफ स्पिन डालते हैं, मिचेल सैनर ने उनसे कहा भाई तुम गेंदबाज बन जाओ, तुम अपनी स्पिन डालो. मार्क चैपमैन ऑल्सो बोल्ड स्पिन, एंड सैंडर ने यह भी रिवील किया था मैच के बाद कि वो लॉकी फर्गसन के पास गए दोस्तों. अब लॉकी फर्गसन न्यूजीलैंड टीम के सबसे तेज गेंदबाज हैं, बाउंसर के लिए मशहूर है, अपनी गति अपनी स्पीड के लिए मशहूर है. उन्होंने उनसे पूछा कि भाई मेट डू यू थिंक यू कैन बोल सम स्पिन? ऑफ दैट मैच दोस्तों 40 ओवर में से 30 स्पिन बॉलर्स ने फेंके. लाइक आई सेड, न्यूजीलैंड यूज्ड अबाउट 5-6 स्पिनर्स. इंडिया फ्रॉम द 1st to the 17th ओवर हार्दिक पांड्या को छोड़ के अर्शदीप और शिवम मावी को गेंद नहीं दिया खुद पांड्या ने. ही यूज दीपक हुडा, माफी चाहूंगा, ही यूज वॉशिंगटन सुंदर, ही यूज कुलदीप, ही यूज चहल. तो दोस्तों हम ये देख सकते हैं कि इन दोनों मैचेस में, हालांकि दूसरा मैच लो स्कोरिंग था, फर्स्ट मैच में इट वाज 177 to 155, सो यू कैन नॉट कॉल दैट अ लो स्कोरिंग मैच. लेकिन वाइड स्प्रेड क्रिटिसिज्म हो रहा है, दोनों कप्तान कह रहे हैं कि यार ये कोई पिच नहीं है. लखनऊ क्रिकेटर को सैक किया गया था. वसीम जाफर, गौतम गंभीर, जिमी नीशम, 2-3 और प्लेयर्स हैं, मैं उनका नाम भूल रहा हूं. मैंने देखा सोशल मीडिया पर कि वो एज एक्सपर्ट्स, एज पंडित, वो कह रहे हैं कि यार दीज आर शॉकिंग पिचेस, these are pitches not conducive to T20 cricket. आपको क्या लगता है? What do you feel? अश्विन आर्या सिंह, वो टर्न नहीं था ऑस्ट्रेलिया के लिए, चेतवानी का टेस्ट सीरीज के लिए. सही बात है. प्रतीक श्रीवास्तव, एक सेकंड, मुझे यहां तो व्यूज नहीं दिखाई दे रहे. लेट मी क्विकली स्विच टू माय लैपटॉप where I think I'll get the questions much easier. हाँ, प्रतीक श्रीवास्तव कह रहे हैं सर क्या मॉडर्न एरा के बैट्समैन का स्किल सेट पहले के कंपैरिजन में बहुत लो है? जब भी बॉलर्स को हेड मिलती है स्विंग या स्पिन, तभी बैटिंग कलैप्स हो जाता है. इवन विराट कोहली, रोहित भी स्पिन नहीं खेल पाते. बहुत ही अच्छा सवाल उठाया आपने प्रतीक श्रीवास्तव. ये पिछले 2 स्ट्रीम्स में हमने इसी बात का जिक्र किया था. आप में से कुछ व्यूअर्स ने पूछा भी. मेरा जवाब यही था, बहुत ही शॉर्ट में कहूंगा, कि जब तक आपके डोमेस्टिक सिस्टम में बेहतरीन स्पिनर्स नहीं आ रहे तो जाहिर सी बात है कि आपकी बैटिंग थोड़ी वीक होगी स्पिन के अगेंस्ट. और मैंने ये भी कहा था एक शो पे कि भाई
अश्विन जब रिटायर होंगे कुछ अगले 2-3 साल में, जब जडेजा जाएंगे, तो आपके टेस्ट में आपके आपके स्पिनर्स कौन होंगे? और ये बहुत ही मुश्किल है दोस्तों ये कहना, बिकॉज कुलदीप के आगे एटलीस्ट फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, डोमेस्टिक क्रिकेट में कोई इतना बेहतरीन स्पिनर नहीं आ पा रहा है। एक टाइम पे कुंबले के बाद हरभजन थे, यू हैड पीयूष चावला, यू हैड प्रज्ञान ओझा, देयर वर इनफ नेम्स, और भी है बहुत सारे स्पिनर का नाम बोल रहा हूं मैं। लेकिन जब आप रेगुलरली डोमेस्टिक में और अपने ए टीम्स में या आईपीएल में आप क्वालिटी स्पिनर्स नहीं खेल पाओगे, तो जाहिर सी बात है कि यू विल ऑल्सो स्ट्रगल टू प्ले स्पिन। और मैंने एक और शो में कहा था कुछ दिन पहले कि मुझे याद है कि ब्रैड हॉग जैसे लेफ्ट आर्म चाइनामैन 2006 में एक सिंगापुर में एक ट्राई सीरीज था डीएलएफ कप करके, और वहां ये युवराज सिंह और रैना को चकमा दे रहे थे। फिर एक टेस्ट मैच में 2007-8 में जो टेस्ट सीरीज हुई थी ऑस्ट्रेलिया में, वहां पे भी ब्रैड हॉग ने युवराज को आउट किया था। तो मैं तो 14-15 साल पहले ही कह रहा था कि इंडिया का गेम अब स्पिन के सामने इतना तगड़ा नहीं है। एंड आई थिंक देयर इज इनफ एग्जांपल्स ऑफ डिसेंट और गुड स्पिनर्स ट्रबलिंग इंडिया। इट्स नॉट अबाउट ग्रेट स्पिनर्स के अगेंस्ट तो बहुत के टीम के बैट्समैन फंस जाएंगे। बट हाँ, जब तक आप क्वालिटी स्पिनर्स नहीं खेलेंगे, और आपका सवाल ये था कि पुराने दिन छोड़िए, अगर हम 15, 18, 20 साल पहले देखें तो क्वालिटी बैट्समैन की इतनी अच्छी थी क्योंकि आपके पास मुरलीधरन थे, कुंबले थे, शेन वॉर्न थे, बहुत सारे क्वालिटी स्पिनर्स थे। और आजकल 2-3 टीम्स को छोड़ के इतनी क्वालिटी स्पिन आपको नहीं खेलने को मिलता है। दिवेश इज बैक, अ रेगुलर व्यूअर, ही इज सेइंग पृथ्वी शॉ चाहिए आज। वेल, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि शॉ को इस मैच में मौका मिलना चाहिए, बट फिर आप किसको बाहर करोगे? आप शुभमन गिल को बाहर करोगे? मानता हूं नहीं चले इस सीरीज में, बट आई थिंक द वेट ऑफ रन्स दैट ही स्कोर्ड इन द वनडे मैचेस विल प्रोबब्ली कीप हिम इन, अनलेस यू ड्रॉप 3 पे कौन आते हैं हमारे, राहुल त्रिपाठी, हु इज नॉट डन मच, एंड यू परहैप्स आस्क गिल और किशान टू बैट एट 3। सुबोध कह रहे हैं सर ईशान किशन कब ड्रॉप होगा? शायद आज वो ड्रॉप होंगे, लेकिन दूसरा कीपर कौन है ये भी देखना पड़ेगा। Chirag is saying, sir, can you disable slow mode? It's taking 2 minutes to send messages. Yes, well, there's a reason I'm doing that, Chirag, because the flow of comments are coming so fast that I need to put a break. Because when I didn't do it 2 videos ago, I was not able to read even 30% of all the messages. That's why, by intention, I've kept a gap because a lot of you ask so many questions. और जैसे मैंने एक क्वेश्चन का जवाब दिया, तो उस बीच 7, 8, 10 क्वेश्चंस निकाल जाते हैं। तो माफी चाहूंगा, I'm sorry, but it's done very, very deliberately because the last 2 streams we had like 400, 500 questions and I was falling short. सुबोध कह रहे अगर आज सीरीज हारते हैं तो रोहित शर्मा, विराट कोहली वापस जाएंगे T20s में? नहीं, आई डोंट थिंक इस आज के मैच के बेसिस में सुबोध कुछ होने वाला है। रोहित ने कहा था कि एक वनडे वर्ल्ड कप में जाहिर सी बात है कि मैं, विराट, राहुल, हम लोग रेस्ट लेंगे। एंड आई थिंक यू विल सी द चेंज ऑफ गार्ड पोस्ट द आईपीएल, यानी कि कुछ 3 महीने बाद जब आईपीएल खत्म होगा, तब शायद आपको ये देखने को मिलेगा। ये मैं ये अपने आप नहीं कह रहा हूं, मतलब कोई सूत्रों के अनुसार नहीं कह रहा हूं मैं, बट आई थिंक आईपीएल के बाद जाहिर सी बात है कि हार्दिक पांड्या को फुल टाइम T20 कप्तानी दी जाएगी। बट रोहित और विराट कोहली का होना ना होना, आई डोंट थिंक वो इतना फर्क पड़ता है आजकल के T20 फॉर्मेट में। दिस इज अ यंग मैन्स गेम एंड आई थिंक एज मेनी प्लेयर्स बिटवीन द एज ऑफ 22 to 30 शुड बी प्लेइंग। अगर आप 32, 34, 35, 36 के हो, आई थिंक यू शुड जस्ट स्टिक टू 2 फॉर्मेट्स। सो आई डोंट थिंक विराट कोहली या रोहित का यहाँ होना इतना कुछ असर पड़ेगा, क्योंकि इन पिचेस पे सर्वाइवल बहुत ही मुश्किल है। और वैसे ही स्पिन के अगेंस्ट विराट काफी वीक है आजकल, और रोहित भी वैसे नहीं चल रहे हैं ज्यादा इस फॉर्मेट में। Monroe dies. Ishan good in ODI and not that effective in T20s in those evening games where it's swinging for the first 2-3 overs. Your take? It's a very good question. Yes, we've seen him, and not just about these matches or in the evening. We've seen him struggle. Even in the IPL, last IPL, he started off with 280s for Mumbai Indians. But then, like the coaches say, the more you can amplify a batsman's problems with all this technology, you will struggle. But in this series, we've seen him struggle even against spin, right? New Zealand started with spin from the first over of that chase in the first match. But I think the problem is that he has technical flaws which are being opened up very, very easily by some quality spinners and pacers. So Ishan Kishan has a big job. I know he scored that 200 and he's a very talented batsman. He's a keeper. He can open, but he's going to have to put in some big scores to stay in the reckoning for the one-day World Cup squad. I think this series has been a massive letdown for Ishan Kishan. Chirag is saying, I still see Virat in T20s. Bilkul, I also do see him there, but for how long? Maybe the end of this year. I don't think he's going to be able to make it till next year's T20 World Cup, which is in the month of June, July, because he's got so much to achieve in a one-day World Cup year. And we might just see him have a fantastic one-day
World Cup, and it might just take out so much energy from Virat that he might have to give up the T20 format. That's just my reading of it, and I don't think we'll see him a year and a half from now playing T20s. Rohit definitely not. Rohit will be done with T20s in the next 6 months. प्रतीक सिंह सर, हार्दिक पांड्या क्या धोनी को कॉपी करता है? कैप्टनसी के साथ अपनी बैटिंग में भी बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है, 15-20 बॉल। वेल, अगर हम इस सीरीज के बारे में, मैं समझ गया आप क्या कह रहे हो प्रतीक। इस सीरीज में ना बैट्समैन जो शुरुआत से मार रहे हैं वो सब आउट हो रहे हैं, और क्योंकि इतना बड़ा रोल है उनका, खासकर जब बड़े प्लेयर्स नहीं है, तो आई अंडरस्टैंड कि वो क्यों इतना टाइम ले रहे हैं, क्योंकि इन पिचेस पे रन बनाना बहुत ही मुश्किल है। तो शायद धोनी वाली बात यहां सही नहीं है, एटलीस्ट मुझे लगता नहीं है कि एम एस धोनी के मुकाबले में कहीं हार्दिक पांड्या आते हैं। Monroe, Rahul Tripathi technically sound. Can he serve India for long beginning this late now? He could. There's nothing to say that he cannot. I mean, Suryakumar Yadav got his chance at what, 31 or something. But Rahul Tripathi is in that mode where I think he probably is backing himself to score quickly. And when you do that, it comes with a lot of risk. This same template, my friend Monroe Dias, that Suryakumar Yadav has been able to implement near flawlessly in T20s. He's an absolute flop in one days because he's not able to do the same things. He's scoring too quickly. And I think Rahul Tripathi might also be guilty of doing the same thing. Yes, he's technically sound. We saw him in his second match. He got 35 of 16 balls. Played some great shots. But when you play those kind of shots, you do set yourself up to fail. And in the first T20, I think he was out for duck in 6 balls. So he's in a spot where there's so much competition. If he does not get a 35-40 in today's match, if he's playing, it might even be the end of Rahul Tripathi. I mean, that's how fickle this format is, especially with Indian cricket. So both कह रहे हैं सर, अगर रोहित शर्मा ODI वर्ल्ड कप जीत देते हैं एज कैप्टन, तो क्या वो अगले साल? नहीं भाई, मैं तो कह चुका हूं, आई थिंक रोहित शर्मा आईपीएल के बाद ही T20 से हट जाएंगे, यानी कि कप्तानी से। वो ODI वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया था पिछले शो में, 2011 में वो टीम में थे, लेकिन वर्ल्ड कप के जस्ट पहले उन्हें टीम से बाहर किया गया था। उस बात को लेकर वो बहुत नाराज थे, बहुत बिटर थे, एंड ही इज गोइंग टू प्रूव टू द सिलेक्टर्स दैट 12 साल पहले उन्होंने बड़ी बड़ी गलती की, उन्हें वनडे टीम से बाहर करके, यानी कि वर्ल्ड कप स्क्वाड से बाहर करके। एंड आई थिंक ही इज मेड इट हिज मिशन टू डू वेरी वेरी वेल इन द वर्ल्ड कप एंड टू डू हिज बेस्ट टू लीड इंडिया टू द वर्ल्ड कप। आई थिंक इंडिया कैन इन फैक्ट विन द वन डे वर्ल्ड कप दैट स्टार्ट्स इन अबाउट 9 months फ्रॉम नाउ, बट क्योंकि तीनों फॉर्मेट में कप्तान बनना, ओपनर बनना बहुत स्ट्रेसफुल जॉब है, बहुत प्रेशर होता है, इट टेक्स इट्स टोल। दैट्स व्हाई आई डोंट थिंक रोहित शर्मा कैन लास्ट टू मेनी मोर मंथ्स being the captain of the T20 side. Chirag is saying, heard that Shreyas is out for the first test. Yes, apparently he's in a race against time to be fit. I would think they'd probably play Ishan Kishan and KS Bharat, because you do need a quality keeper. I think there's no comparison between the two. KS Bharat is a far better keeper than Ishan Kishan. He's been around the team as an understudy, as the second keeper to Pant and Saha for 3 years now, so he should definitely play. But you also may want to fit in a lefty, given that Pant's not around. So I think you might see them both, unless the team opens with Rahul and Rohit Sharma, and then says to Shubman Gill, look, we see you in the middle order for a long format. Why don't you bat in the middle order? So I think it'll be KS Bhatt for Pant and Ishan Kishan for Shreyas Iyer. I know a lot of people are saying कि सूर्य का टाइम है. I get the argument, but शायद इतनी जल्दी एक मैच में वो सूर्या को नहीं खिलाएंगे. Just my gut feel. दिवेश, जेमी यार इस बार BGT का थोड़ा डर लग रहा है. हाँ, Australia or the number 1 ranked side, they've got very very good spinners. I'll say it once again. I've said it in every stream when this question has come up. This series, यानी कि the 4-match Border Gavaskar Trophy, to my mind, will be decided on how many and which spinners Australia pick. That's what it's going to come down to. Monroe, they're saying Shubman Gill is going to play at 5 in place of Iyer and not Surya. बिल्कुल, मैंने वही कहा था, and I fully agree. I think it is more logical to have Shubman Gill drop down rather than give a debut to Surya, who's not been doing much in the last couple matches. That's just my feeling. नवजोत पाजी वापस आ गए. की हालचाल पाजी? आज कौन जीतेगा भाई? अगर जो पिच में टर्न हुआ ना, तो मैं फिर भी बैक करूंगा कि हमारे बंदे कुछ कर पाए, बट यार ये सैंटनर जो है और ये सोडी जो है और ये माइकल ब्रेसवेल जो है, अगर जो इस पिच में टर्न हुई, और हम सब जानते हैं कि अहमदाबाद पिच मोटेरा ट्रैक में बहुत स्पिन देखने को मिलता है, तो अगर न्यूजीलैंड ने एक और स्पिनर खिलाया, तब यार हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा. आई थिंक भाई बैटिंग पहले करो और कहीं से यार 150 बनाओ, देन यू कैन टर्न द स्क्रूज. Yes, India is not playing. Also, the pitches, it's very, very tough pitches to score on, Paji.
तो पिचेस को देखते हुए मतलब 99 डिफेंड करना, न्यूजीलैंड ऑलमोस्ट डिफेंडेड इट, थैंक्स टू सूर्यास 26 नॉट आउट ऑफ 31 बॉल्स। ऐसी पारी आपको बार बार खेलनी पड़ेगी। Chirag, I think Akshay will be the key. He's doing better than Ashwin in the last few days. Yes, he's a fantastic player in home conditions, but Ashwin is Ashwin, यार. Ashwin is going to Ashwin against the Aussies always does something. तो इस टाइम भाई साहब मैं कह रहा हूँ एक ही पेसर खिलाओ और चार चार स्पिनर खिलाओ और देखो क्या होता है. Play Kuldeep also. Vivek Singh is back. I think you missed a couple streams. Good to see you back. Most important player comes after one down. Do you really think Tripathi is our important player? But you're saying most important player comes after one down. यानी कि नंबर 4 पे. बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ. The most important player does bat at number 4, not number 3. That's why Surya bats at number 4. That's what you're saying. Your most important player comes after one down. So after one down means number 4. If that's what your point is, I agree with you. If you're saying the most important player comes at 3, I'll say no. The most important player comes at number 4. यानी कि Surya और वो 4 पे आ रहे हैं. Monroe saying Michael Bracewell long for my player. For the upcoming times, what do you think gives those Nathan McCullum vibes to me? Yes, he's got that solid vibe. Look, he's got his chance at 28. He's been playing a lot of domestic cricket. He's not someone who's valued by these leagues across the world, but he does whatever he knows very, very well. उनकी bowling में बहुत ही अच्छी बदलाव आया है. तो he's a player who can do well in all formats. I think he's 28. So you're looking at, if he stays fit, 6-7 years of competitive cricket across formats. नवजोत पाजी कह रहे हैं if BGT is draw, what happens next? नहीं, India cannot afford a draw. India cannot afford a draw. India can only afford a 3-1. यानी कि 4 टेस्ट मैचेस से वो केवल एक हार सकते हैं और उन्हें 3 जीतना पड़ेगा. Anything less than 3-1 and India are not going to make it to the WTC finals. पाजी प्रतीक कह रहे हैं सर जडेजा आएगा तो क्या अक्षर सुंदर को डायरेक्ट रिप्लेस करेगा? बिकॉज अक्षर सुंदर ने भी बहुत बिल्कुल. आप कौन सा फॉर्मेट लेके आप पूछ रहे हो, वनडे या T20? अगर आप स्पेसिफाई कर सकते हो भाई तो मैं बताऊंगा. बिकॉज आई थिंक T20 में अभी जड्डू का इतना बड़ा योगदान नहीं है क्योंकि आपके पास अक्षर हैं जो बहुत अच्छे चल रहे हैं T20 में. आपके पास ऑलरेडी वॉशिंगटन सुंदर है, कुलदीप का साल भाई, ये कुलदीप का साल है तीनों फॉर्मेट में. देखना अगर आप मुझसे पूछ रहे हो T20 के बारे में, मैं कहूंगा नहीं, जड्डू को रहने दो. जड्डू का सबसे बड़ा योगदान है भाई टेस्ट फॉर्मेट में. कितनी बार मैं कह चुका हूं इस शो पे, आप लोग ये बात सुन चुके हो, आप लोग के बारे में बात करूं तो प्लीज हिट दैट लाइक बटन दोस्तों. प्लीज कृपया आप जो भी है, चाहे आप यहाँ पे एक पल के लिए आए हो या पूरा लाइव स्ट्रीम के ड्यूरेशन के लिए, प्लीज हिट दैट लाइक बटन. तो भाई प्रतीक श्रीवास्तव, जडेजा को T20 से वैसे ही ज्यादा बाहर करना चाहिए. ही कुड बी अ बिग प्लेयर इन अ वनडे वर्ल्ड कप ईयर. घर पे वनडे वर्ल्ड कप है, वो अक्सर अपने 10 ओवर में 45-50 रन देकर एक विकेट लेते हैं. वो एक विकेट टेकिंग बॉलर नहीं है, वो एक रिस्ट्रेनिंग बॉलर है. पर इतने बेहतरीन प्लेयर, इतने बेहतरीन फील्डर, बल्लेबाज. मैं चाहूंगा कि जड्डू T20 ना खेलें, केवल वनडे वर्ल्ड कप में हर वनडे मैच खेले. इनका बहुत बड़ा योगदान हो वनडे वर्ल्ड कप में और इस बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में. आई होप ही कम्स बैक बिकॉज ही इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दीज 2 फॉर्मेट्स. Chahal has lost his charm or are batsmen reading him better now? Monroe Dice, it's the both aspects you've raised. The answer lies in both of them. I would not say it's one over the other. It's absolutely the same thing. Please go read my friend and former colleague Nagaraj Golapuri's interview in Crick Info yesterday with Sunil Joshi. इसी बात को लेकर बड़े अच्छे सवाल जैसे कि नागराज हमेशा पूछते हैं. He's a fantastic interviewer, a fantastic journalist. And listen to what Sunil Joshi, former India spinner, who was a selector until recently, read how he has described Kuldeep and Chahal, and you'll get a lot more answers, better than any answer I could give you. Chirag is saying, to be honest, I have issues with the selection of KL. How can he be made vice captain when his position 11? Yes, I agree with you, but I would say more than him being made vice captain when his position is questionable, I don't think it's that. I have a problem with KL Rahul being given leadership roles when he's never captained Karnataka. He's never captained India A. His captaincy experience is what, 4 or 5 years leading very, very piss poor IPL teams. You know, he led Punjab. Punjab changed their name both times, either side of him being captain. Both times he got runs. Where did his team end up? 7th, 8th, 6th. So he's not a natural leader. Forget his place being questionable. That's not for you and me to decide. My thing is, जब बंदे ने कभी leadership किया ही नहीं, and what is leadership in IPL यार? Very, very overrated, right? So when he's not been proven, when his domestic teams have not made him a leader, when the A teams have not been a leader, what does the Indian team see in what leadership skills do Indian teams see in KL Rahul? That, my friend Chirag, is the bigger question. Kamal Sagar कह रहे हैं, hi, like done.
थैंक यू कमल सागर. प्लीज आप बाकी लोग भी कमल सागर की तरह बनिए और लाइक बटन दबाइए. Vivek Singh, can we trust Jaddu as a finisher? No, that's what I'm saying. Right now, I would not be investing too much time in Jaddu in T20s. He's not getting younger. He's getting older. He's coming off a surgery. Use him in the two formats where he has much more to offer you. Test. He can bowl you 20 overs a day. His batting, he's arguably the most important player in India's test lineup. अगर आप शौक हो मेरी बात सुन के तो आप खुद जाके अपने वक्त में, अपने कीमती वक्त में आप रिजल्ट्स देखिए, स्टैट्स देखिए. जब भी रविंद्र जडेजा इंजर्ड हुए हैं तो टेस्ट टीम में जो बदलाव हुए हैं वो अक्सर नाकामयाब रह चुके हैं. बिकॉज देयर व्हेन यू आर ट्राइंग टू अकोमोडेट टू प्लेयर्स टू get him back to full strength, get him in 1 days, in a 1 day World Cup year, and then assess where he is, and by all means get him back in test cricket. He's not going to be able to win matches in T20s anywhere near the rate he can in tests and in 1 days. दिवेश, सुनील जोशी का नाम सुनते ही वो साउथ अफ्रीका वाला स्पेल याद आ गया भाई. अक्सर मुझे भी यही ख्याल आता है. And I watched that match in Bombay at my home. It was during a break. I was watching it. And he got Herschel Gibbs LBW. He got what 5 for 6 or something. Outstanding. I remember that match. उसमें विजय भारद्वाज थे. उसमें 4-5 ऐसे players थे जो नए आए थे. And one was of course Sunil Joshi. And 10 overs, 5 for 6 or something. Exactly. You said it. 6 maidens, 5 wickets. कमाल की बात थी वो. Unfortunately, India went on to that final. That was a very, very good match. Also, Jamie says, Chirag, if a player has repeatedly shown failures in pressure important situations, would you take him to another World Cup because he has an average of 15 position? Yes, I still would, because, and I know where your question is coming from. I've been asked the same question in the last 3 live shows. I've said KL Rahul at number 5 as a batsman, I don't mind, because he's not had to bat in many pressure situations like that. And in terms of a tournament, but in the bilaterals where he has, he's averaging 51 point something and his strike rate is 102. When you can reel off, 650s and 100 from number 5, which frankly after Yuvraj Singh, no one's been able to do that regularly. I see value in KL Rahul playing as a number 5 in 1 day. But of course, if he fails in the next 9 months, then there's no way he can walk into India's World Cup squad. My problem with KL Rahul being in the 11 is as a wicket keeper. Do you want a person who's a secondary keeper, who's not a professional keeper, who's not a first choice keeper? Do you want him keeping wickets in a World Cup match? We saw what a drop catch and a missed stumping can do in Bangladesh. Now, that happens in a World Cup, and Khuda na khasta, because of KL Rahul's average keeping, India loses a World Cup match. Then you're going to have the guy out to dry. So I'm okay with KL Rahul being in the team because of his 1 day stats, but I do not think he should be keeping wickets in 1 days, and definitely not in a 1 day World Cup. That would be a travesty if they put a player of his experience, of his stature, but also of his fallibility in crunch matches, if they give him the keeping as well. That would be a problem. प्रतीक, 1 डे वर्ल्ड कप के लिए बेस्ट बॉलिंग कॉम्बिनेशन. अच्छा, ये सवाल तो पिछले बार भी आ चुका है, मैं आपसे फिर से कहूंगा. जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, उमरान मलिक, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल / जडेजा एंड हार्दिक पांड्या. दैट्स माय बॉलिंग. ये कमेंट तो मुझे हर व्यू में आता है. हार्दिक भाई जुड़े फिर से. हार्दिक भाई, क्या ट्राई सीरीज ओटी पहले की तरह मिनी वर्ल्ड कप? हाँ भाई, ये सवाल भी अक्सर आता है और मैं तो कह चुका हूं, मैं बहुत बड़ा फैन हूं. पिछले 2-2.5 साल से कह रहा हूं कि बायलैटरल को बंद करो. बायलैटरल मैचेस से बोरिंग कोई भी फॉर्मेट नहीं है. आई थिंक गोल्फ और F1 के बाद ये सबसे बोरिंग मुझे यही लगता है. बायलैटरल 1 डे सीरीज, 5, 6, 7 मैच की सीरीज. ट्राई सीरीज लाइए, क्वाड्रेंगुलर लाइए, इतना इम्पॉसिबल नहीं है. आपको थोड़े कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेंगे. आपको कुछ प्लेयर्स को लीग्स खेलने की इजाजत देनी पड़ेगी. It's very possible. Get 3-4 of the top boards to sit together. Tri series and quadrangulars are very doable. Have the Champions Trophy every 2 years. The 1 day match needs context, and these meaningless 3-5-7-0 bilateral matches offer zero context. What is your opinion on Shaw in T20? He can replace whom? Well, I'm not a fan of Shaw in T20s. आप शायद मेरे videos नहीं देख चुके हैं पहले. I think he's got to do a lot more. I've gone through his numbers. His numbers are pretty average when it comes to T20 in the last 2 years. He's not done enough to earn selection in my mind. And even the selection for this series,
पृथ्वी शॉ का सिलेक्शन उस दिन हुआ जब उन्होंने 300 मारा था असम के सामने। तो इस बंदे को आपने रिकॉल किया T20 में उनके फर्स्ट क्लास नंबर्स पे, नॉट ऑन T20 नंबर्स। आई डोंट थिंक शॉ इज गोइंग टू प्ले, आई थिंक देयर इज टू मच कंपटीशन। अगर आज खेलेंगे तो आई बी सरप्राइज, because yes, Shubman Gill has struggled, yes, Ishan Kishan has struggled, but they both have one day double hundreds to their credit of late. I just don't think Shaw right now is in the right frame of mind to be playing T20 cricket. बहुत से viewers कह रहे हैं अरे लेकिन he's made for this game, उनका strike rate है। हाँ भाई, पर उनके बल्ले से वो बड़े T20 runs नहीं आ रहे हैं unfortunately. So that's my view. प्रतीक श्रीवास्तव, मुरली विजय, भाई नाम तो ठीक से बोलो। मुरली विजय retired recently but people remember him only for controversy. No, not at all. I remember him. He was one of our best openers for 6-7 years. अगर लोग उन्हें सिर्फ controversy के लिए याद करते तो शायद वो तो proper fans नहीं। I think this is a very ill-informed question you put, Pratik Srivastava. I think most people who know cricket will say that this guy was a damn good opener for 6-7 years, played a big role in many Indian achievements overseas. तो I don't know anybody, at least in my circle, जो मेरे cricket fans है, who will know him for any controversy. He was a damn good test batsman, averaged almost 40. The team probably used him a year too long. He had really struggled. पर अगर आप देखें तकरीबन 6-7 साल तक this guy was a very fine opener and his record shows he got what 12-13 test hundreds. कमाल की बात है। बाय bilateral जही पाजी, बिल्कुल। What's update on Sanju Samson? नहीं यार, खबर तो कुछ नहीं है संजू सैमसन को लेकर। What's your take on Awwal Number? Awwal Number was a film, like most of Dev Saab's films, was a film ahead of its time. Pitch controversy, a terrorist group coming in, digging up the pitch, doing things. Didn't this happen a few years later, more or less? So, utterly bakwas movie वैसे। I mean, the cricket. You watch that match, Amir Khan, aka Sunny, वो shot मारे, उनके पास दो shot था, एक cut और एक pull, and you can tell he strides so। हालांकि आमिर खान एक अच्छे भले क्रिकेटर हुआ करते थे, आप लोग नहीं जानते इस बात को, लेकिन कयामत से कयामत तक और दिल की रिलीज तक आमिर खान अक्सर मेरे पिताजी यानी कि श्री टॉम ऑल्टर who passed away in 2017, वो उनके क्रिकेट टीम में बैट्समैन हुआ करते थे। एंड एज अ लवली स्टोरी, आई रिमेंबर दिस वाज अ खार जिम खाना। मैं तकरीबन पता नहीं 10 साल का था और मैं गया था वहाँ पे। एक्चुअली मैं तो गया था फ्रेंच फ्राइज और नींबू पानी पीने। दिस वाज अ नेट प्रैक्टिस फॉर माय फादर्स टीम, MCC, मैच कट क्लब, और आमिर खान नेट्स पे थे और उन्होंने उस दिन ज्यादा बैटिंग नहीं करी। वो मेरे पिताजी के पास आए, उन्होंने कहा सर अफसोस की बात है, बड़ी दुख है कि मैं आपकी टीम में नहीं खेल पाऊंगा, बिकॉज जो मेरे फादर और जो मेरे अंकल है वो कह रहे हैं कि आपका चेहरा उस पर बहुत लोगों की उम्मीदें और पैसे लगे हैं और खुदा ना खास्ता आपको बॉल लग जाए तो आपकी एक्टिंग करियर खत्म होने वाली है। और उस टाइम आई थिंक इस फिल्म हिज दिल वाज कमिंग अप एंड आई रिमेंबर वाचिंग दिस कन्वर्सेशन एंड देन सो यस, बट डिस्पाइट आमिर खान बीइंग अ वेरी गुड बैट्समैन एट दैट टाइम, जो शॉट्स पाजी उन्होंने अव्वल नंबर में मारे थे, दे लुक सो फेक, सो स्टेज्ड। But yes, I will say it was an entertaining, पकाओ film overall, but ahead of its time. क्या कहाँ मुझे ले गए भाई आप अव्वल नंबर की बातों में। Akhil Mishra is saying, yes, I think you joined a bit late. Somebody asked the same question. I still don't think he'll play because India still need a keeper in Ishan Kishan. And I think despite being an utter misfit in the T20 international team, they will probably still persist with Shubman Gill because of his recent form. So I don't see Shaw playing. Chirag, I think Shaw was selected just to stop rumors. I think you're right, Chirag. आपकी बात से सहमत हूँ. He's not the first choice. Yeah, I think he was just selected because, like I said, he scored 380 odd runs. तो उसका पता था. Kamal, hey Jamie, I guess you didn't sleep last night, हैं? नहीं भाई, मैं तो बड़े आराम से सोया. What do you think about Washington Sundar? I think he's next all-rounder. Absolutely, I said this on my last show with my guest, Mr. Neeraj Bhadwar, the creator of Fake It India. मैंने कहा भाई क्यों हम नेक्स्ट हार्दिक पांड्या, नेक्स्ट कपिल देव, नेक्स्ट इरफान पठान के खोज में हैं? We have quality spin bowling all-rounders. In a one-day World Cup here, when it's going to be a one played on flat tracks, on these kind of tracks, you don't need to have a next Hardik Pandya. Play the spin bowling all-rounders you have. Play Washington Sundar, play Akshar Patel, play Ravindra Jadeja. These guys stand to do much more. How big of a yogdan, how big of an impact did Yuvraj Singh have bowling off-spin, doing his off-spin in the 2011 World Cup? So in a World Cup year, pick players like them. Pick the Sundars, pick the Akshars, and I think they stand to do better
than any seam bowling all-rounder. Vivek Singh कह रहे हैं अरे वाह, looking handsome as always. Thank you मेरे दोस्त, thank you, very kind of you. Prateek saying Murli Vijay. बिल्कुल, absolutely. He was one of the best openers we had. Umran right now, blow hot, blow cold. Is he in that World Cup squad? Unfortunately, he's not. He's not done much in the last 3-4 games. So he needs. I think he's better, and maybe not all of you will agree with this. मुझे लगता है दोस्त कि Umran Malik is better suited to India's one-day team right now than T20. His one-day record, his one-day economy, खासकर, is much better than his T20 economy. So if you have to pick him, I would say use him more for the one-day World Cup. In a one-day World Cup year, he's going to offer you that shot of pace which you will need. So maybe don't play him too much in T20s. Maybe use Arshdeep there, Shami there. But in the one-days, I would say, like I said, pick Bumrah, pick Mohammad Siraj, pick Umran Malik. Should be your 3 frontline bowlers for the World Cup, despite the blow cold form. Kamal Sagar कह रहे हैं, I'm your biggest fan. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त. Thank you. नवजोत पाजी कह रहे हैं, केन का स्कूल मैच है. स्कूल मैच वो हारे भाई, वो हारे. हमारा वीकेंड मैच. अच्छा सवाल पूछा. अगर आप मुझे 2 पिन देंगे तो मैं खुद की तारीफ यहाँ करना चाहूंगा. नहीं, ऐसी बात नहीं है. और वीकेंड मैच, we were a couple batsmen short. We were bowled out for 77 in 12.3 overs on a somewhat up and down, a typical Delhi winter Jasola sports complex pitch. 77. और मिनी इनिंग्स ब्रेक में मैंने कहा था अपनी टीम से, बाय द वे आई एम नॉट वन फॉर पेप टॉक्स, वैसे सालों हम इन्हें 65 पे आउट करेंगे और हम 10 रन से ये मैच जीतेंगे. आप यकीन नहीं करोगे, दूसरी टीम ने 1 विकेट से जीता. दे वन, दे गॉट टू 78 for 9 in 12.5 overs. At one point we had reduced, in the power play we had reduced them to 28 for 3, and then myself along with another bowler, we reduced them to 75, so 74 for 9 in 12 overs. I had 1 over left. I bowled 3 overs, 1 maiden, 7 runs, 4 wickets. I dropped a catch off my own bowling. मैं अगर वो कैच पकड़ता तो यकीनन पाजी, मेरी टीम LIT, हम वो मैच जीतते. मैंने खुद एक कैच छोड़ा, वेरी सिंपल कैच, और हमारे एक और प्लेयर थे, उन्होंने हमारे बेस्ट फास्ट बॉलर विकास, उसकी गेंद पे उसने कैच छोड़ा. बट इमेजिन, वी ऑलमोस्ट डिफेंडेड 77. इफ दैट वन कैच had not been taken, they would have won that match. So that was a very, very brief summary of my match. Any highlights you see will become a sport? नहीं भाई, फिलहाल मेरा बेटा जो 8 साल का है, he's more into arts. He's a good musician, he's a good singer, he's a good mimic. वो अपने कुछ टैब पे कुछ फिल्म देखते हैं, कुछ शो देखते हैं, तो ऐसी नकल निकालते हैं वो. So I think while he's tried basketball, he's tried football, he's tried cricket, he's probably more inclined toward the arts. Very good personal question. Thank you. Okay, back to the thing. Vineet Kumar, a new viewer. Hi sir. What do you think India should have to change the opening pair? Well, we've already addressed this question several times. अब बहुत लोग कह रहे हैं कि शायद आज पृथ्वी शॉ को मौका मिलना चाहिए. I still think they will go for the same openers despite their poor scores, because they need a proper solid keeper, and Shubman Gill's form in one days has been so good that I don't think they're going to change. That's just my view. प्रतीक कह रहे हैं, सर ये दीपक चहार का क्या सीन है, 2-3 मैच खेलता है, अच्छा परफॉर्मेंस. हाँ बिल्कुल, मैं समझ गया आप कहाँ जा रहे हो. वो बहुत ही इंजरी प्रोन है दोस्त प्रतीक, वो बहुत ही इंजरी प्रोन है, और अफसोस की बात है ये. हाय, वाचिंग फ्रॉम न्यूयॉर्क, टिबेटन नोमैड वाचिंग फ्रॉम न्यूयॉर्क सिटी. वाओ, मस्ट बी फ्रीजिंग कोल्ड देयर. Is Shikhar Dhawan going to get one more opportunity for international game? Well, there's only one format he could get a chance in, one days. And frankly, my friend, I don't see him getting that chance. I said it on my last show. Despite having an outstanding record in the one-day match, especially at home and especially in ICC events, I don't think they're going to give Dhawan that one match, because it's a World Cup year. And when he doesn't fit into your scheme of plans for the one-day World Cup starting in 9 months, it would be rather odd if you just called him back for one odd bilateral series where KL and Virat and Rohit have been rested just for that farewell match at the Kodla. I'm not saying it's impossible. We've seen stranger things. Ashish Nehra's farewell match. No more comments there, but yeah, I just think logically there's no room for Shikhar Dhawan right now, because Rohit's back in form, Shubman Gill scoring hundreds for fun. So yeah, but thanks for joining, Tibetan Nomad. What's your real name, by the way? Vivek saying, this year we bring home the World Test Championship and hopefully World Cup. Vivek, I think it's much more feasible, much more realistic to expect the team to bring the one-day World Cup home.
WTC to beat this Australian team, minimum 3-1. बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है. Chirag, agree, Jamie. I want India to try Sundar and place Hardik for at least one ODI match. Bilkul. He should have got a lot of chances because whenever he gets those sporadic chances, more often than not, Washington Sundar has a very, very impactful performance with ball, very economical bowler, and a very handy lower middle order player. हार्दिक भाई, जेवी भाई, मेरा क्वेश्चन रह गया. पूछो सवाल पूछो. सरफराज का चांस है फ्यूचर में? देखो, चांस तो है. अगर आप हर सीजन 800, 900, 1000 रन ठोकते हो तो आपको मौका मिलेगा. आप युवा खिलाड़ी हो, बस थोड़ा वेट लॉस करिए. और जब तक पुजारा स्कीम में है, जब तक केएल राहुल स्कीम में है, तो इनको थोड़ा सब्र से काम लेना पड़ेगा. पर बिल्कुल इनका टाइम आएगा. ऐसा कोई चांस नहीं है कि अगले 2 साल में सरफराज खान टीम में ना आए. रन तो वो तोड़ रहे हैं, क्राइसिस मैन अपने आप को साबित कर चुके हैं. बट थोड़ा फाइट है अभी. द टीम इज गोइंग more for experienced players, which is why we're saying Pujara. Plus also Pujara has 3 more test matches to get to 100. जैसे ही पुजारा अपना 100 टेस्ट खेलेंगे और बीजीटी खत्म हो जाएगा तो बदलाव होगा ही. तो there's definitely a space for सरफराज खान, but शायद अगले साल. What's your prediction for India versus Australia series? Well, I've said this before. I still think India can win by the required 3-1 margin to stay alive for the WTC final. But like I said again on this show and the last 3 shows, in my mind, Vineet Kumar, mere dost, the result of the 4-match Border Gavaskar Trophy hinges more than anything else on which spinners Australia play and how many. Are they going to play Agar and Lyon? Are they going to play Agar, Swepson, Murphy? They will have to beat India with the spin game. Their pace bowlers, yes, they're very, very experienced. But I think the kind of tracks we're going to see, and India's got they have more problems against quality spinners. I think this series is definitely India's series. They should win it. But what spinners Australia pick and how many, that is where the result lies. उस्मान ख्वाजा का क्या सीन है भाई? कुछ वीजा इशू? हाँ, मैंने देखा था. cricket.com का एक ट्वीट था, cricket.com.au, sorry, but I have not had time to read the article, so I'm not sure. जैसे ही ये स्ट्रीम खत्म हो जाएगा, मैं वो आर्टिकल पढ़ लूंगा. Not sure what the scene is. चलिए भाई, 37 minutes on the clock. Maybe I can do another 3-4 minutes. Then I got to get back to doing some things. I've got to write a preview. Sorry, I've got to write a preview. I've got to. हाँ, कुछ और बड़ी अच्छी खबर है आप लोग के लिए regarding this channel, which I will share with you in a couple days. I think you'll all be very, very happy to hear the news I'll be giving. Cannot give it right now, but I'll give it out in a few days before the Border Gavaskar Trophy. Pratik Srivastava is saying, who will be the highest scorer in BGT? Whoever plays spin the best. Virat Kohli, if he can conquer his demons, I think you might see him. I had big hopes from Shreyas Iyer, but unfortunately, लग रहा है कि वो पहला टेस्ट नहीं खेलेंगे. Look, as long as it's not Usman Khwaja, Marnus Labuschagne और स्टीवन स्मिथ, I'll be very happy. बस इन तीनों को जल्दी आउट करो. ये तीनों जो फॉर्म में भाई, इन्होंने जो एफर्ट किया है, जो मेहनत करी है स्पिन खेलने के अगेंस्ट, इन तीनों को आउट करो. बाकी मुझे, आई नो Travis Head racks up runs for fun in Australia, but he's always struggled in Asia. I don't think he's a threat. I don't think Alex Carey is a big threat. It's just Khwaja, Labuschagne and Steve Smith. I know Warner's there, but Warner's a tired batsman. So I think as long as it's not these 3, I'll take any Indian player. भाई जो भी हो, बस अपना बंदा होना चाहिए. चलिए दोस्तों, प्लीज एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लाइक बटन दबाइए. जितना भी आप लोग लाइक बटन दबाएंगे, आप में से प्यारे व्यूअर्स, तो इस वीडियो का रीच सबसे ज्यादा है. सब्सक्राइबर्स भी लाइक, इज इट गिव अवेज? हाँ भाई, आप लोग साथ दीजिए इस चैनल का, तो मैं जैसे ये चैनल बढ़ता रहेगा और थोड़ा मोनेटाइज हो जाएगा और थोड़ा सफल हो जाएगा, तो आई ट्राई एंड मेक इट मोर रिवॉर्डिंग फॉर ऑल ऑफ यू व्यूअर्स लाइक विवेक सिंह, who've been around for a long time on this channel. बाकी आपके पास कुछ सजेशन हो इस चैनल के लिए कि मैं कैसे इस चैनल को ग्रोथ और भी तेजी से कर पाऊँ, कुछ आइडियाज हैं, तो प्लीज शेयर योर व्यूज. फाइनल क्वेश्चन, उमरान फॉर चहल टुडे. Look, again, it's Ahmedabad and spin has outfoxed all the batsmen. The Pacers ने कुछ खास तो किया नहीं इस सीरीज में. I think India would probably play one more spinner, probably drop a fast bowler, probably drop Shivam Mavi and play another spinner. Eclairs देंगे जेमी भाई, लगे रहो, लाइक करो. Thank you दोस्त, thank you all to you. Have a great Wednesday. I'll see you tomorrow after this match for another live discussing the match, and then we'll talk about Border Gavaskar Trophy in the coming days. It starts on February 9th. Fantastic series, the best test series of this year lined up in a little over a week from now. Thank you all for joining. This is me in my mug of black coffee and my Star Wars mug saying goodbye, take care, Jai Hind.